So, should we proceed? Okay. First, the topic Emile Durkheim. Emile. देखिए इनका बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस किए थे, है ना? बैकग्राउंड इन इंट्रोडक्टरी क्लासेस and also in functionalist perspective as per Emile Durkheim. Yeah, Emile Durkheim was a French sociologist. As a French sociologist, he tried to develop sociology as science and scientific line. His contention was to create sociology in such a way, the way we apply the scientific method in study of science, natural science subject. Now, such kind of method we can apply also to study the sociological phenomena, the sociological aspect of society. So Emile Durkheim, he was also a functionalist. In a functional approach in context of economic, whenever in society economic situation create, now it is a need of society to generate some alternative to control such economic situation. So that was his functional contention about. Now, being a sociologist, Emile Durkheim, now he contributed, itself the development of subject matter of sociology, like itself जो आपके syllabus में जो दिए गए हैं itself syllabus, जो new subject matter, he talks about division of labor, social fact, religion and society, suicide. So before him, no one talked about such kind of unique phenomena and unique explanation about society. So it is Emile Durkheim contribution also to itself enrich the subject matter of sociology. That's why we can call sometime as a father of sociology, right? Emile Durkheim also. Although the main father of sociology is Auguste Comte, he provides sociology its name. He was influenced by Auguste Comte also. Auguste Comte was the first sociologist who talks about sociology should be the science of society, and by following their tradition, further propounded new theory, new concept, right? Yeah. So for better explanation of society scientifically, or in science-like style, now Emile Durkheim said, in society we have to study the social fact. Although we have discussed what is mean by fact value, objectivity, sociology is science. Unit 2 में discuss किए हैं ना, what is fact, right? Now here he provide a different view about social fact. Sometimes we call also Emile Durkheim or Durkheimian model of the social fact, right? पहले देखते हैं सोशल फैक्ट के बारे में, देन अदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है इटसेल्फ इन सोशोलॉजी. सोशल फैक्ट, SOCIAL, social fact, right? Social fact. Now he talks about, Emile Durkheim talks about, for better understanding of the society, first we have to seek out what is the fact. Now fact is one of the characteristic of the science, right? What in natural science we study by making something fact, evidence based. So here, if sociological aspect, the sociological phenomena, if we have to read scientifically, then there must be the component of society, the aspect of society would be the fact one. That's why he propounded such kind of concept of social fact. It means in society there is also a social fact. So what is actually Durkheimian model of social fact? What could be the social fact, right? So he further talks about some of the characteristic for being a social fact. Emile Durkheim contention, society is filled with social fact. Filled with social fact, and sociologists
have to seek out the social fact and then to scientifically study or observe the social phenomena. So what could be the social fact? Social fact. Social fact. Now Emile Durkheim said, if we have to make it scientifically, the social aspect, our approach, then first we have to treat social fact as a thing. We have to treat social fact as thing. थिंग का मीनिंग समझिए, राइट? थिंग, वस्तु, वस्तु, चीज, दैट बिकम अ थिंग. So according to him, the aspect of society is nothing but a thing. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आज दिमाग यहां पे रहना चाहिए प्योर 110%. क्या? So first he talked about we have to treat social aspect as a thing. As soon as it become a thing, वस्तु, जैसे ही social fact, social aspect कोई वस्तु बन गया, now it become external, external to itself, the member of society, the individual personality. It become external in nature. External in nature as soon as the social fact become the thing. As soon as it become the thing, external in nature, it means in separation, it means it has their own independent existence. Own independent existence. Independent existence, right? Now further he talks about in his model of social fact. Now this thing, this social fact, have collective consciousness, collective consciousness towards the people. People recognized actually what is that thing, what is that phenomena, hai kya, right? So people collective consciousness towards the thing. Collective consciousness. As soon as people collective consciousness towards anything, vastu, cheez, social aspect, social fact, it means that become the general for the people. Collective consciousness और generality इसी को बोलते हैं, और general या generality. Become generally for the people, right? So first we have to treat as a thing, external, independent, collective consciousness, right? Now this social fact has capacity to control or influence the society, the people. It means it become a coercion in nature upon the society, coercion in nature upon the people. So it start constraining the individual behavior, shaping the society. Constraining people's behavior, लिखते जाइए सारे के सारे फीचर. स्टार्ट कॉन्स्ट्रेनिंग पीपल बिहेवियर और कॉर्सिव इन नेचर, इसी को बोलते हैं कॉर्सिव इन नेचर. कॉर्सिव इन नेचर. So if in any fact or anything we are able to get such features, externality, independent existence, collective consciousness, constraining the people behavior or the coercive in nature by itself the social fact, then we can call the thing become the social fact. जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए तब ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, अगेन अभी रुक जाइए तब लिखिएगा. नीरज वेट.
again I am going to repeat what is social fact and why Durkheim said we should study the social fact. Emile Durkheim talks about if we have to study sociology as a science, then we have to apply the science and scientific method in study of social aspect, social phenomena. Now we know the fact. What is mean by fact? That we study in science. In same way, society also contains some social fact. That is the social reality. That reality in existence in our society, that is observed by everyone. That becomes the social fact. So Emile Durkheim said society is filled with social fact. Whenever researcher go to the observation or any research, now observer first have to choose social fact and then they have to study the society. So how researcher will observe the social fact? So Emile Durkheim provides some features, some traits of social fact. He talks about for identifying the social fact, first we have to treat as a thing. किसी भी चीज को हम thing बनाएंगे वो social fact बन जाएगा. Now, like think about for an example. Now, one and another way each people are associated with religion, certain kind of religion, norms and value of society, right? Can we call religion as a social fact? Just examined by Durkheimian model, Durkheimian traits of social fact. Now think about this is a religion, right? Now I treat as a thing. हम इसको वस्तु बना दिए. रिलीजन को हम बना दिए क्या? वस्तु. जैसे इसको हम वस्तु बना दिए, एज ए थिंग बना दिए. नाउ दिस रिलीजन, इट मीन्स द थिंग बिकम एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल. ये एक एक्सटर्नल इंटिटी हो गया, अपना एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस हो गया रिलीजन. So that is going to contain one of the features. Now B number, second number, it has independent existence also. Now as soon as it becomes external entity as a thing, it means it has their own existence, own independent existence. So it become independent also. Clear? It become independent also. Now collective consciousness. Now what is this religion? Almost the member of society, one and another way associated with certain kind of religion. So people have consciousness towards ये चीज है क्या, तो हम इससे जुड़े हुए हैं, right? So it have collective consciousness and it become generalized in society. Everybody knows about that, right? And the last one, coercive in nature or constraining people behavior. Now this social fact have capacity to control the individual, to control the society, or to implement their norms, value upon the society. So it become coercive in nature. नहीं, इस आपको follow करना पड़ेगा. So it is going to contain all of the features of the social fact. So here we can say that religion become a social fact. Religion become the social fact. So these are the certain characteristic of social fact for identifying the social fact. What could be the social fact? Now think about other examples of social fact. Now you tell me other example, and by on the basis of the explanation of Durkheimian model, now you teach me what could be the social fact. देखिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसमें कुछ है नहीं, social fact है क्या actually? Anything. Society, Durkheim said, society is filled with the social fact. Society is filled with the social fact, right? So social fact could be anything. If these features could be there, then that would be called as a social fact. Now talks about family. Of course, family is a social fact. जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है सारे के सारे सोशल फैक्ट हैं. Not only social institution, norms, certain norms also become social fact. Values become social fact. As soon as these features would be applied, it becomes social fact. Now how family becomes social fact? Think about family.
देखिए सोशियोलॉजी में क्लियरिटी आता है मोर एंड मोर एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा रिलेट करना है, राइट। इवन आप लोगों को स्किल जो पैरामीटर बताए हैं, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन जैसे ही आप बॉडी पार्ट में लिखने आते हैं इटसेल्फ, डिफिनेशनल रिमार्क, ये सारे के सारे एस्पेक्ट लिखेंगे, अपना आइडिया थिंकिंग कैपेसिटी जनरेट करेंगे, सारे के सारे लिखेंगे, एंड ट्राई टू रिलेट विथ इटसेल्फ एग्जाम्पल मोर एंड मोर। एग्जाम्पल मेक्स मोर क्लियरिटी टू द illustration of your itself the body part, and then उसके बाद डायग्राम पुट करने की कोशिश कीजिएगा। So how, question is arising, how a family can be called as a social fact? Now you tell me, teach me, just see here and explain। नहीं तो बस अपना शो हम भी स्टार्ट कर देंगे। एक्सटर्नल, फर्स्ट यू ट्रीट एज ए थिंग, फैमिली एज ए थिंग, वस्तु हो गया ना, जैसे ही ये थिंग हो गया इट इज गोइंग टू एक्सटर्नल टू सेपरेट फ्रॉम द इंडिविजुअल। फैमिली को हम वस्तु बना दिए थिंग, इट बिकम देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक्सटर्नल बन गया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बन गया। नाउ कलेक्ट फैमिली का फंक्शन क्या है, एवरीबडी नोज, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दैट बिकम जनरलिटी। हर सोसाइटी जितने भी लोग हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी, है ना, कोई ना कोई फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली से, फैमिली का सर्टेन पर्पस है, दैट्स व्हाई पीपल बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट, और समटाइम दे ट्राई टू क्रिएट द फैमिली, कलेक्टिव कंसिस्टेंस, जनरलिटी। नाउ अगेन फैमिली हैव ए फंक्शन, सर्टेन फंक्शन, so it is going to control and shape the society, socialize the society, so it become coercive nature upon the society, individual itself. So now it is going to control the individual behavior or coercive in nature. That's why family become the social fact. So he said society is filled with the social fact. Tell me. Now norms, value can be social fact. Huh? Certain value in form of tradition, it can be called as a सोशल फैक्ट ऑल्सो, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट इन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जो आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। जैसे लॉ कोड, लीगल कोड, है ना, इटसेल्फ योर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रूल रेगुलेशन सारे के सारे लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन डेमोक्रेटिक कंट्री, लाइक तो कोई भी एग्जांपल हो सकता है ना, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट, caste is also a social fact, that is also a social reality. So these thing also going to contain, keep caste as a, first you have to treat as a thing. ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, डिस्कस सोशल फैक्ट एज ए थिंग एज पर इमाइल डरखाइम, सोशल फैक्ट एज ए थिंग, क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू देखिएगा पूछ चुका है। तो रीजन टू पुटिंग और चूजिंग सोशल फैक्ट एज ए थिंग only because of as soon as we develop or we make social fact as a thing, now it become a more scientifically to study the society, social aspect with clear observation, है ना। तो साइंटिफिक स्टडी करने के लिए इमाइल डरखाइम प्रपोज करते हैं we have to treat as a thing, right, because he was a functionalist one, belongs from following the August Comte tradition itself. तो हम लोग प्रीवियस बैकग्राउंड में डिस्कस किए थे सोशियोलॉजिकल थिंकर बैकग्राउंड। तो कास्ट कुड बी ऑल्सो अ सोशल फैक्ट। नाउ इट बिकम थिंग, इट बिकम एक्सटर्नल, इट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नाउ कलेक्टिव कंसियसनेस, वन एंड अनदर वे पीपल एसोसिएटेड विद एनी कास्ट, आइडेंटिटी से तो जुड़े हुए हैं, एनी आइडेंटिटी। नाउ कॉन्स्टेनिंग पीपल बिहेवियर और कॉर्सिव इन नेचर। नाउ लोग बताते हैं कि नहीं हम इस कैटेगरी से हैं, इस कास्ट से हैं। Now, so it become influencing to the people nature, people behavior, है ना। तो ETC कर दीजिए।
तो सोशल फैक्ट बनने के लिए सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए, राइट? इफ द ऑल फीचर्स शुड बी देयर देन इट कैन बी कॉल्ड एज ए सोशल फैक्ट। एक्चुअली कंसेप्ट समझे, सोशल फैक्ट एक्चुअली है क्या? हाँ, तो क्लियर? शुड वी प्रोसीड फर्दर? राइट डाउन करना है, लिखना है, फीचर्स लिख लीजिए, इसको आगे बढ़ फटाफट फटाफट। क्या हो गया? नाउ टेल मी द अदर एग्जांपल and you explain me by putting these features. लिखते रहना चाहिए आपको ना, फटाफट लिखते चलिए। कोई दूसरा एग्जांपल बताइए आप, एग्जांपल बताइए और। हाँ हाँ, जैसे कास्ट, कास्ट डिस्कस किए, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द सोशल फैक्ट, कैसे? ऑफ कोर्स, बट हाउ? अगेन थिंग मानिए, देन इट बिकम एक्सटर्नल, independent, it becomes generalized for the people because of collective consciousness towards that fact, that become influensive nature upon the people, start constraining the behaviors, so it become coercive nature कि नहीं हम रहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, नॉर्म्स, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, आई नीड दैट कॉन्शियसनेस। चलिए बात करते हैं टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। देखिए ऊपर चला गया, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का एक अलग मजा रहता है नहीं? टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट ये तो बहुत बड़ा हो गया, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, राइट? देखिए डिफरेंट डिफरेंट बुक में कई तरीके से एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट, और एक थर्ड वन लिखा रहेगा पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल काइंड ऑफ सोशल फैक्ट। किसी किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा नॉर्मल सोशल फैक्ट, एबनॉर्मल सोशल फैक्ट, इसी को बोलते हैं पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। कभी लिखा रहेगा मटेरियल सोशल फैक्ट एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, है ना, घबराना नहीं है, सब देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? नाउ पहले देखते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। फर्स्ट वन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट और मटेरियल सोशल फैक्ट, राइट? नाम से के लिए है मटेरियल सोशल फैक्ट, द फैक्ट विथ एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ मैटर, मटेरियल सोशल फैक्ट इज टेम्पल, मटेरियल और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। टेम्पल, टेम्पल इज एवरीवेयर, इन रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मटेरियलिस्टिक फॉर्म बना हुआ है ना, ब्रिक, सीमेंट, बालू, सैंड, ये सबसे बना हुआ है, तो दैट बिकम द मटेरियल सोशल फैक्ट। अगेन सोशल फैक्ट बनने के लिए सारे के सारे जो फीचर्स है वो होना चाहिए उसमें। एंड नॉन मटेरियल विच इज नॉट इन मटेरियलिस्टिक फॉर्म, नॉट इन मटेरियलिस्टिक फॉर्म, दैट बिकम एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट, यस, रिलीजन, ऑफ कोर्स,
abstract form, and that become materialistic form. Materialistic and abstract form, materialistic form. क्लियर? एग्जाम्पल आप बोलेंगे और हमको समझाएंगे, ठीक है, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, और अपने अंडरस्टैंडिंग जनरेट करके लिखने की कोशिश करेंगे. लॉजिकल सोशोलॉजी पढ़ने में सोशोलॉजिकल थिंकिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी है. वंस यू एबल टू habituated of such kind of technique, tactics, not going to stop you. लिखना कैसे है आंसर, ये तो गेम है, and just we have to understand the game. Now materialistic social fact, मैटर से बना है, materialistic form, and abstract social fact, non materialistic social fact जो abstract है. एग्जाम्पल दोनों का फटाफट फटाफट बोलते जाइए, तीन तीन एग्जाम्पल. यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. पार्लियामेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, स्कूल्स. टेम्पल. नॉन मटेरियल, caste, religion, now all these things become abstract norms. So that is a two types, material and the non-material. Other form कहीं कहीं देखिएगा लिखा होगा in context of institutional social fact or non-institutional. Institutional social institution, IANS TITU. ओह, आजकल वर्ड पे कुछ और हो जा रहा है नहीं. IANS TITUTIONAL, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट. नॉन institutional social fact and non-institutional social fact. So what could be the institutional social fact? जितने भी institution हो गए, now that already become the social fact. How many institution is there? Institution पढ़ाए थे ना, social institution, social structure, social system, institution, right? Religion, polity, family, economy, and education, right? These five are main primary social institution. Other are also secondary social institution. Education, now education में ही आ गया primary, secondary, tertiary education. These become the secondary social institution. Now that cannot be, that may be the secondary social institution. That may be the secondary social institution, but only there is these five primary social institutions. So institutional social fact, anything which is existed in our society as a form of institutional, that can also become under the social fact, right? Primary social institution, secondary social institution, all become the social fact of the society. हो जाएगा? बोलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलिए फटाफट. सोशल इंस्टीट्यूशन, yes, except these things, right? Nuclear family, joint family, marriage, everything is institutional, right? Marriage is also institution. So these become the institutional social fact. And non-institutional social fact, this is not in institutional form, है ना? Certain structure of society, the social structure also becomes social fact. Certain structure, pattern, stratification, that is also
फैक्ट ऑफ द सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए, जो इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, either in abstract form, right? Value is also abstract form, norms and value, abstract form, so non-materialistic kind of social fact that become the non-institutional social fact. जो आगे ऊपर देखे थे ना, materialistic and non-materialistic. Now this non-materialistic form of social fact can be called as a non-materialistic social fact also, right? क्लियर है यहां तक? देखिए कहीं कहीं लिखा रहेगा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशल फैक्ट एंड एबनॉर्मल। इसी को बोलते हैं पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, ठीक है। What is mean by normal social fact? The fact which is accepted by the society, is accepted by the society, that become the normal social fact, and as soon as the fact that is not accepted by the society, that is exceed the tolerant limit of the society, that become the abnormal and the pathological social fact. Is crime fact of society? Crime is a fact, it is everywhere. Crime सब जगह है ना। Now think about, जब पिटी क्राइम होता है ना, छोटे छोटे क्राइम, ना उससे सोसाइटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई आया खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहा है छज्जी के नीचे घर के, ऐसे हाथ किया, ऊपर से CFL खोल के पॉकेट में रखा, लेके चल दिया, उतना क्राइम चलेगा। देखा कि कार से जा रहा है, किसी का देखा कि अरे बड़ा अच्छा गमला रखा हुआ है दरवाजे पे, उठाया, आपने खोला, कार में रखा, फिर कार चल दिया। दैट इज ऑल्सो ए क्राइम, चोरी तो है वो। तो दैट इज, अगर नॉर्मल काइंड ऑफ क्राइम होता है, दैट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, है ना। सोसाइटी पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नाउ दैट बिकम द नॉर्मल सोशल फैक्ट। तो क्राइम बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाए विद इन द टॉलरेंट लिमिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। किडनैपिंग, मर्डर, रैंसमगिरी, सब कुछ शुरू हो जाए। नाउ इट बिकम एबनॉर्मलिटी फॉर द सोसाइटी। नाउ क्राइम बिकम द पैथोलॉजिकल स्टेज। नाउ हियर सोसाइटी नीड some alternative anomic situation creates in society. Abnormality, anomic situation arises. To control such anomic, now it is a functional need of society to create some alternative one. यहीं से पुलिस सिस्टम, है ना, सर्विलांस सिस्टम डेवलप होने लगते हैं to control such kind of act, to checkmate such kind of act. So sometime, if the fact that is accepted by the society, that become the normal, not accepted, it become abnormal, pathological. Again, to controlling this pathological stage, it become a functional need of society to maintain again the normality. Now इसको इस तरीके से समझ लीजिए, by act of any personality or act of any individual in society. चोर वही चोरी कर रहा है ना, छोटा मोटा चोरी कर रहा है, तो सोसाइटी के मेंबर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में बोलते हैं अरे रहने दो, छोटा मोटा चोर कर रहा है, वो भी अपना शौक पूरा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब गलत ज्यादा काम करने लगे, तो सोसाइटी उसी को एक्सपेल कर देता है, सोसाइटी से निकालो इसको, भगाओ, जेल में डालो इसको। इंडिविजुअल इज सेम, लिमिटेशन में था, यहां लिमिटेशन एक्सीड कर दिया, नाउ इट बिकम द पैथोलॉजिकल स्टेज, इसको हटाओ यहां से, दैट बिकम, देयर एक्ट बिकम एबनॉर्मल काइंड ऑफ सोशल एक्ट, सोशल फैक्ट, है ना। वो क्रिमिनल बन गया, प्योर क्रिमिनल, क्राइम करने लगा, बिग क्राइम, दैट बिकम एबनॉर्मल सोशल फैक्ट, एंड क्राइम लिमिटेड था तब तक। इसको इस तरीके से समझिए। नाउ जैसे कुछ फ्रीडम फाइटर हमारे हैं, सम ऑफ द एक्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर, गांधी को कैसे बोल सकते हैं फादर ऑफ द नेशन? आते हैं। नाउ थिंक अबाउट महात्मा गांधी एक्ट।
द एक्ट ऑफ महात्मा गांधी वाज नॉर्मल फॉर द इंडियंस, नॉर्मल काइंड ऑफ सोशल एक्ट, उसको बोलेंगे उनका जो एक्ट था दैट इज ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट, है ना। वो जाते थे आराम से, क्या शानदार तरीका था उनका, आराम से गए, बैठ गए, एकदम अर्गर मार दिए, जद्दी मान, न हिलना है न डुलना है, ठीक है, तो मेरे बात तो मानना ही होगा तभी हम यहां से निकलेंगे। हाँ, गांधी क्या बोलते थे, मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूं, जहां पे सत्य है वहां पे अहिंसा है, ठीक है। तो वो सत्याग्रह करते थे ना, सत्याग्रह करते थे। तो नाउ देयर एक्ट फॉर द इंडियंस वाज ए काइंड ऑफ हीरोइक एक्ट, ब्रिटिशर्स के सामने जाकर खड़े हो जाते थे, है ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता था दूसरा। तो नाउ देयर एक्ट इज ए नॉर्मल काइंड ऑफ सोशल एक्ट, फॉर अस गांधी वाज ए हीरो बट फॉर ब्रिटिशर्स ही वाज ए विलन। उसका जो एक्ट था दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, क्राइम, क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्ट, है ना। अब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जब मन करे तब जाए, धरना दे दे, पूरा घेर ले चारों तरफ से, तो गलत हो गया ना, गवर्नमेंट को भी अपना फंक्शन करना चाहिए। तो नाउ द एक्ट ऑफ गांधी जी वेर एबनॉर्मल फॉर द ब्रिटिशर्स काइंड ऑफ सोशल फैक्ट, नाउ फॉर अस इट बिकम नॉर्मल फॉर द इंडियंस, इंडियन सोशल फैक्ट। तो नॉर्मल एबनॉर्मल का कंसेप्ट समझ रहे कि नहीं। नाउ फॉर ब्रिटिशर्स he become, it creates a pathological stage, and for Indians now it makes our society normal stage। ब्रिटिशर्स चला जाएगा तो फिर हमारा सोसाइटी नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग रूल करने लगेंगे, वी विल स्टार्ट लिविंग एमिकेबली, दैट इज नॉर्मल एंड नॉर्मल सोशल फैक्ट। एग्जाम्पल आप देंगे, एग्जाम्पल बताइए और समझाइए हमको, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। यस, how now tell normal and abnormality here। Yes, right, certain steps लेंगे to control communal rights। जितने भी नॉर्मल स्टेप्स होंगे दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, द रिलेटेड अथॉरिटी इटसेल्फ, नाउ अगेन इट बिकम द नॉर्मल स्टेज ऑफ सोसाइटी, इट बिकम नॉर्मल फैक्ट। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, 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 नो डाउट। यस, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। मतलब सोशल फैक्ट क्या है किसी को बता सकते हैं ना, तब बिल्कुल बताना है, ऐसा बताइए कि अंदर घुस जाए दिमाग के। देखिए, एक है आपका रूल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन हो सके अगर टाइम मिले तो डिस्कस कर लेंगे इटसेल्फ। ऑब्जर्वेशन, रूल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट ऑल्सो, देखते हैं कहाँ तक जाता है। लिखिए, रूल फॉर explanation of social fact, rule for explanation of social fact, okay।
कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, डिस्कस द सोशल फैक्ट एज ए थिंग, राइट? वी विल कम ऑन दैट पॉइंट, पहले यहाँ पे चलिए। रूल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट। एक कोट है ना, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझना बुद्धिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, ये तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगा। वो एटीट्यूड क्रिएट कीजिए, ठीक है? एटीट्यूड क्रिएट कीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है सोशियोलॉजी में। समझ में कैसे नहीं आएगा भाई? सोशियोलॉजी इतना टफ है ही नहीं जितना अननेसेसरी टफ बनाया जाता है इसको। इनडायरेक्टली वे में सोसाइटी में बस वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दैट वी आर जस्ट रीडिंग। बस इसी को ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करना है, दैट बिकम आवर। देखिए, रूल फॉर explanation of social fact itself, how we can explain the social fact. Now we discuss the social fact. What was the reason to introduce the social fact in society itself? Now we have to discuss the rules of the social fact. Now first is cause. Causal explanation है ना, causal explanation। साइंस में कोई चीज स्टडी करते हैं या रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ढूंढते हैं ना क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है, क्यों हो रहा है, क्या चीज है, कैसा है, राइट? कॉज ढूंढते हैं ना साइंस में। तो इन सेम वे फॉर एक्सप्लेनिंग द सोशल फैक्ट, व्हाट इमाइल डर्कहाइम टॉक्स अबाउट, वी विल ट्राई टू लुक फॉर द कॉजल एक्सप्लेनेशन। क्यों है ये, क्या फंक्शन है इसका सोसाइटी में, व्हाई इट एग्जिस्ट। So we are focused on such kind of phenomena. Why this exists? What is this? What is the function? What is the function of preparing for civil service examination? कुछ तो फंक्शन है आपका। Now your act is also a social normal kind of social fact. Huh? Now, what Emile Durkheim talks about, the first explanation is causal explanation. ठीक है, causal explanation in which we focus on what, why, क्यों है, क्या है, राइट? कैसे हो रहा है, साइंस में यही देखते हैं ना। If we have to make it science, Emile Durkheim talks about, if we have to make it sociological aspect, to study of sociological aspect as a science, then we have to explain this on science like explanation. First is causal explanation. Science में भी करते हैं, sociology में करते हैं ना, causal explanation. So now that become one of the way to explain the social fact. Now religion is a part of society, है ना? Now we can explain by applying the causal explanation. What is religion? Why religion? How? Right? Now another explanation, he talks about functional basis, functionality. Functional explanation. Functional explanation, right? It means function मतलब functionality, need के basis पे, there is a certain need of, है ना, to make it social fact or to explain that any phenomena that become the social fact. So in functional we are focused on the need itself. What could be the functional need? Functional need. Functional need.
Now think about religion. What could be the functional need of the religion? To provide good ethics, norms, value, to shape the society, to socialize the society. Now all these things become the functional need. Clear? And the last one he talks about, by doing comparative explanation. By doing comparative explanation, now also we can explain the social fact. Comparative explanation. Comparative explanation. It means the one social fact, one thing, one phenomena can be the cause of another phenomena, or there may be some relation between one social fact to the other social fact. That may be also one of the way for explanation. जैसे साइंस में एक्सप्लेन करते हैं ना किसी चीज का cause, and sometimes we compare with the other things in science. In same way, in sociology also we can explain the other social phenomena by explaining the other one. Even we can compare. We can compare, comparative kind of explanation we can do. Like think about poverty. Now, how will you explain the poverty? Now, there are various conditions for the poverty. Poverty is a social fact. That's social fact. Clear na? Now, think about what could be the cause of poverty? Inequality. Now, that is also a social fact. Now, here inequality explain, or we can compare with the poverty. That is a comparative kind of explanation. तुलनात्मक हिंदी होता है इसका, है ना? So now inequality, lead to poverty situation. Deprivation also lead to the poverty situation. Social exclusion lead to the poverty situation. Illiteracy, etc. lead to the poverty situation. It means here तुलना हम कर सकते हैं ना. One social fact is a cause of another social fact. One social fact is a cause of another social fact. Now in same way, marriage is a social fact. Divorce is also a social fact. One cause of explanation to the other social fact, right? इसी को sometimes we call concomitant relation. The one cause is a cause of other. तो साइंस में हम लोग यूज करते हैं ना concomitant. One thing become the cause of other. Concomitant. मार्केट में घूम रहे हैं, ऐसे जाइए, घूमते घूमते जाइए, किसी को घिस दीजिए, स्लैप मार दीजिए. मारने का मन है तो जाइए घिस दीजिए. सर्टेनली कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स वो भी करेगा. दैट बिकम द कनकॉमिनेंट. जाइए घूमते घूमते मार दीजिए, वो भी आएगा, वो भी मार देगा. दैट बिकम द कनकॉमिनेंट कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन. देखिए, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट देयर आर थ्री वे. वन इज कॉजल एक्सप्लेनेशन. दिख रहा है ना? फर्स्ट इज कॉजल एक्सप्लेनेशन. नाउ सेकेंड, वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल need, functionality, that is a functional explanation. And the last one is comparative explanation, right? Functional explanation and comparative explanation. Clear? Wind up करें फिर और proceed करें. चलिए यहीं पे wind up करते हैं. तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए, इसमें दो तीन और बच गया है जो हम लोग देखेंगे. ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं सोशल फैक्ट को, ठीक है, तो सब देखते हैं, कल करते हैं. ओके.
आते हैं दैट इज ऑल्सो ए सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो ए सोशल फैक्ट। सबसे पहले सोशल फैक्ट है क्या समझेंगे तब ना। डिवीजन ऑफ लेबर इज ए सोशल फैक्ट, सोसाइटी इज ए सोशल फैक्ट, रिलीजन इज ए सोशल फैक्ट। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल फैक्ट, तब तो आएंगे वो सब पे। पिक्चर भी बाकी है दोस्त, पिक्चर बहुत बाकी है भाई, ठीक है। पिक्चर का आधार तो पहले समझ में आना चाहिए ना, पिक्चर तो एकदम धराम से चलेगा, क्या चिंता करते हैं आप। ओह चलिए ठीक है नीरज, शट डाउन कर दीजिए, ऑफ कीजिए।